Okay, let's continue this lecture. अब हमें इसका कन्वर्स करना है, इस थ्योरम का, इस प्रपोजिशन का कन्वर्स पार्ट. Conversely, assume that conversely assume that for all a belongs to s minus 0, as is equal to sa is as is equal to s and sa is equal to s. We show that हमें प्रूव क्या करना है, S is zero semigroup. We show that S is zero group. Sorry, S is a zero group. That is S minus zero. S से अगर हम जीरो को बाहर निकालेंगे, it's equal to G is a group. ये हम प्रूव करना है. S minus zero is a. तो अभी हम ग्रुप की प्रॉपर्टीज देखनी है. So first, this G should be closed with respect to multiplication. Associative property इसके पास होगी because S is semigroup है, G इसका सबसेट है S का, तो associative property तो G में होगी ही. अब आपको क्लोजर प्रॉपर्टी एक्चुअली चेक करनी है और फिर वो यूनिवर्सल आइडेंटिटी देखनी है. तो उसकी जगह पर हम वही करेंगे, ए जी इज इक्वल टू जी. अगर हमने प्रूव किया तो इतनी वहाँ से फॉलो होगा कि ये ग्रुप है. So first we verify that G is closed. First we verify that G is closed with respect to multiplication. So let's take two elements in G. Let A comma B belongs to G. So then neither A nor B equal to 0. Then A is not equal to 0, B is not equal to 0. अब हमें प्रूव क्या करना, ए बी भी जी में, मतलब ए बी भी नॉन जीरो है. फॉर इफ ए बी इज नॉट इन जी. सपोज अगर ए बी जी में नहीं है मगर एस में तो होगा ये, बिकॉज एस इज सेमी ग्रुप. ए और बी दोनों जी के एलिमेंट्स से, इट मीन्स दैट दे आर बोथ द एलिमेंट्स ऑफ एस. एंड एस इज अ सेमी ग्रुप, देयरफॉर एस इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन. So which means that the product AB it belongs to S. तो आपने माना है कि सपोज फॉर इफ अगर ये G में नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, AB किसके बराबर होगा, फिर S में है मगर G में नहीं है. yes? जीरो के बराबर, एग्जैक्टली. बिकॉज S इज इक्वल टू G यूनियन जीरो. G में नहीं है, इसका मतलब है कि ये जीरो के बराबर होगा. तो A भी जीरो के बराबर है. अब हमें एक्चुअली कंट्राडिक्शन चाहिए है. then this S square which is equal to S into S. But we know that S is equal to SA as A is not equal to 0. For all A not equal to 0, SA is equal to S. And for all B not equal to 0, B is not equal to 0. So BS is equal to S. B is not equal to 0. This is equal to S ABS. But this AB is equal to 0. It's S0S, which is equal to 0. So S square is a 0. It's a zero semigroup. And so हम प्रूव करेंगे S भी 0 के. And so this S which is equal to AS or SA, one and the same thing. It's equal to AS. It's equal to its subset, sorry. But this A, it belongs to S, so it's subset of
s into s, which is equal to s square, and that's equal to 0, which is a contradiction because s is not equal to 0. It's a 0 semigroup, it contains at least 2 elements, which is a contradiction. So therefore AB belongs to G. Therefore AB belongs to G. The product G is closed with respect to multiplication, and hence G is a semigroup, and hence G is a. अब हमें G group चाहिए. We need to show that this G is a group. Okay. Yes. हाँ. आपकी आवाज नहीं आ रही साफ है. सेट क्या है मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा आपका क्वेश्चन. बोल रहे हैं आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं शायद. रिकॉर्ड नहीं कर रहे मैं. नहीं रिकॉर्ड हो रहा है. रिकॉर्ड हो रहा है ये. Okay, next we show that for all A, B belongs to G, AX equal to B, and this YA equal to B, YA equal to B. These two must have solution. Solution in G for all A, B, and G. So it's given that now let's take any 12. Let A, B belongs to G. Then by our assumption, AS is equal to S. Okay, AS is equal to S, and SA is equal to S. It's a give for any two non-zero elements. So now B is in S. B is in S since B is in G, therefore B is also in S. अगर B S में है और AS S के बराबर है, AS किसके बराबर है? S के बराबर. यहाँ से भी देखिए B S में है since B belongs to S, so there exists X comma Y in S such that AX is equal to B and YA is equal to B. ये ठीक है? हाँ ये बताइए, क्लियर हुआ आपको? B इस S में है ना, तो B फिर AS में भी होगा ना. B अगर AS में होगा तो B एलिमेंट ऑफ B A इंटू एलिमेंट ऑफ S होगा कोई, है ना. इसी तरह से B इस S में है, यहाँ से इस S में B है, तो ये जो S है ये SA के बराबर है. मैं इसको ऐसे लिख, ये जो आपने लिया ना B आपने S से लिया, बट व्हाट इज S? S इज इक्वल टू AS.
इसका मतलब है कि बी ए एस में है। अगर बी ए एस में है तो बी किसके बराबर होगा, बी होगा ए इंटू एलिमेंट ऑफ एस। इसी तरह से ये बी एस में है और यही एस एस ए के बराबर भी है, तो दैट मीन्स दिस बी मस्ट बी इक्वल टू एलिमेंट ऑफ एस इंटू ए, एलिमेंट ऑफ एस इंटू ए, वाई इंटू ए इक्वल टू बी, सो दिस वाई इज इन एस। मगर हमें इनका सोल्यूशन चाहिए जी में, है ना, इनका सोल्यूशन एस में आ गया, बट वी वांट द सोल्यूशन इन जी। So for that we must show that both elements x and y, they are both non-zero. They are both non-zero. We show that x not equal to 0, y not equal to 0. Both are not equal to 0. For if x equal to 0, then अगर x 0 के बराबर होगा, लेट्स प्रीवियस, अगर x 0 के बराबर होगा तो b क्या होगा, b इज इक्वल टू a इंटू 0, देन b इट्स इक्वल टू a 0 which is equal to 0, a contradiction, because b is in g, it's not equal to 0, a contradiction, as b belongs to g which is equal to s minus 0. So similarly this y is not equal to 0, thus x is not equal to 0, thus x is not equal to 0, thus x is not equal to 0. Similarly this y is not equal to 0, so hence x comma y belongs to g as रिक्वायर्ड। यही आपको चाहिए ना, g में इसका सोल्यूशन होना चाहिए as रिक्वायर्ड। Next we define sub-semigroup. Sub-semigroup. Let S be a semigroup and T be subset of S, then T is said to be a sub-semigroup of S if for all A, B belongs to T implies the product is in T. Product belongs to T, that means T is closed with respect to the operation, with respect to multiplication. Associative law इसमें आ ही जाएगा क्योंकि ये S का सबसेट है, S में associative है, और equivalently T square is subset of T, ये भी आप कह सकते हो, T square subset of T. So there are some trivial sub-semigroups. If S is a semigroup, with 0 and identity 1, then the 0, this identity and whole S are the trivial sub-semigroups of S, or trivial sub-semigroups of S. ये S के sub-semigroups होगी, because अगर आप इस में दोगे ना, मतलब एलिमेंट लोगे 0 इंटू 0 0 के बराबर, वो इसी में है, इसी तरह से यहाँ पर 1 इंटू 1 वो 1 के बराबर, S तो है ही, closed with respect to multiplication, so they are all sub-semigroups. And if
if there is an element, if there exists an element E in S such that E square is equal to E, called idempotent, इसको हम idempotent कहते हैं, called idempotent, idempotent, then this set E is also a subsemigroup, because E square is equal to E is also a idempotent. जरूरी नहीं कि ये आइडेंटिटी के बराबर होगा, ठीक है, और जीरो के बराबर. इट्स डिफरेंट, it may be different in some semigroups. So then this E is also a sub-semigroup. So sub-semigroup of S. So these are the definitions. These are the examples of sub-semigroup. अब sub-semigroup कब subgroup होगा? If a sub-semigroup T of a semigroup S is a group, अगर ये ग्रुप होगा, सपोज अगर ये सब सेमीग्रुप इसका क्या होगा, ग्रुप, then T is called a subgroup. इसको हम कहेंगे सब ग्रुप ऑफ S. S खुद ग्रुप नहीं है, बट ये सब सेमी ग्रुप इसका ग्रुप, इट्स कॉल्ड ए सब ग्रुप ऑफ. कोई एग्जांपल है आपके पास जहाँ पर जो बिगर सेट है वो सिर्फ सेमी ग्रुप है, बट उसका जो सब सेट है वो ग्रुप है? ये एग्जांपल yes. कोई which set? Yes, Z. Under multiplication. Okay, Z under multiplication. Yes, exactly. Z under multiplication is a semigroup. Is a semigroup. And this set, if I take G equal to 1 minus 1, it's a subset of Z, is a subgroup, is a subgroup of Z. और कोई एग्जाम्पल आप लीजिए S इक्वल टू द सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, और यू कैन टेक n क्रॉस n मैट्रिसेस where A, B, C, D belongs to R. Then S is a semigroup with respect to the matrix multiplication. Then S is a semigroup with respect to the matrix multiplication. It's not a group, because 0 0 0 is there. और कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा with respect to the matrix multiplication. With respect to addition ये ग्रुप है, but not with respect to multiplication. And take this T. कौन सा सेट लेंगे हम? Type of matrix जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो. ओके, जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो, AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0. Then this T is a subgroup. Is a subgroup of S. This T is a subgroup of S. Next, you define a right ideal, left ideal. Right ideal. Let this S be a semigroup and A be subset of S. Then A is said to be a right, or right here left, okay, bracket में left ideal. If right means A के एलिमेंट्स राइट साइड से होंगे, एस ए इस सबसेट ऑफ एस. आप एस का कोई भी एलिमेंट लीजिए, ए का कोई भी एलिमेंट लीजिए, इनका जब आप प्रोडक्ट लोगे वो ए में ही आना चाहिए, सबसेट ऑफ ए.
और लेफ्ट में क्या करोगे आप, ये ए जो होगा ये लेफ्ट साइड में होगा, ए एस सबसेट ऑफ ए. In case if A is both left as well as right ideal, then we call it a two-sided ideal. If A is both left ideal and right ideal, then we call it a two-sided ideal. A two-sided ideal of this. Two-sided ideal of S. So this is an exercise for you. Every ideal is a sub-semigroup of S. Exercise. Whether left ideal or right ideal, show that every ideal, it may be right ideal, left ideal, two-sided ideal. Two-sided ideal is a sub-semigroup. Is a sub-semigroup. Every ideal of a semigroup, okay, of a semigroup S, is a sub-semigroup of S. Is a sub-semigroup of S. It's very simple. You can easily verify it. So फिर हम आज इतना ही करेंगे. इस 405 है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉर्फिज्म डिफाइन करेंगे, सेमीग्रुप मॉर्फिज्म और मोनाइड मॉर्फिज्म, और हम उसमें देखेंगे अगर एसओटी आपके पास दो सेमीग्रुप्स है, ठीक है, मॉर्फिज्म सेमीग्रुप्स की क्या है, वो ये है एक्स वाई फाई इज इक्वल टू एक्स फाई वाई फाई, है ना. और मोनाइड मॉर्फिज्म डिफरेंट. अगर ये मोनाइड्स है ना तो उसकी दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. एक तो ये प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी इट शुड आल्सो प्रिजर्व द आइडेंटिटी 1 phi is equal to 1. That's called a monoid morphism. Monoid morphism or semigroup morphism, they are both different. If they are semigroup, then semigroup morphism has only one property. If they are monoids, and if I want to define monoid morphism, then it must have two properties. First property is the semigroup morphism property. Second, it should preserve the identity also. And we will see that if S and T are monoids, and phi is a semigroup morphism, that means phi satisfies only first property, then phi need not be monoid morphism, then it may not preserve the identity. It has identity. जैसे ग्रुप्स के केस में क्या है, अगर आपके पास दो ग्रुप्स होंगे G और H, इनके दरमियान कोई मॉर्फिज्म होगी और वो ऑटोमेटिकली वो जो मॉर्फिज्म है ना वो खुद ही आइडेंटिटी को प्रिजर्व करता है, और वहाँ पर एक्चुअली इनवर्स का यूज होता है. बट यहाँ पर वो नहीं. आपके पास अगर ये मोनाइड्स है, इनके पास आइडेंटिटी है, इसके पास भी आइडेंटिटी है, इसके पास भी आइडेंटिटी है, और ये मॉर्फिज्म है, सेमीग्रुप मॉर्फिज्म है, मतलब ये सिर्फ इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स वाई फाई इक्वल टू एक्स फाई वाई फाई, देन इट मे नॉट प्रिजर्व द आइडेंटिटी इन जनरल. तो इसकी एग्जांपल भी हम देंगे कल, इसको हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है. यस है, कोई क्वेश्चन है इसमें? यस सर हम पीडीएफ इसके कोई सर. यस इसकी बुक, हाँ वो मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ.